Now let us discuss the last one, the F block elements. So generally the definition is same, but a slight change is there. So the elements in which the valency electron, the last electron, if it enters into the f orbital, they are called as F block elements. तो पीरियाडिक टेबल में ये सभी एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ ऑर्बिटल में एंटर हो गए तो वो एलिमेंट्स को हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसा बोलते हैं हम. सो जनरली पीरियाडिक टेबल में लास्ट में 2 रोज रहता. सो द 2 रोज ऑफ एलिमेंट्स एट द बॉटम साइड ऑफ द पीरियाडिक टेबल. तो पीरियाडिक टेबल में देखें तो लास्ट में 2 लाइन्स रहता है, 2 रोज रहता है. उसको हम लैंथेनॉइड्स बोलते हैं, इसको हम एक्टिनॉइड्स बोलते हैं. सो द लैंथेनॉइड्स फ्रॉम सीरियम टू लुटीशियम 58 एलिमेंट सीरियम है, 71st एलिमेंट लुटीशियम है. ऑक्टेनॉइड्स में थोरियम 98th एलिमेंट, लॉरेंशियम 103 एलिमेंट. तो ये सभी एलिमेंट्स ये पीरियाडिक टेबल में बॉटम में रहता. तो ये सभी एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में एंटर होता. तो इसलिए ये सभी एलिमेंट्स को हम लैंथेनॉइड्स ऑक्टेनॉइड्स को हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसा बोलते हैं. सो लैंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स दे आर बिलोंग्स टू एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ओनली बिकॉज in all these elements the last electron it enters into pre-penultimate f orbital. तो यहाँ पर एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, प्री पेनल्टीमेट एफ ऑर्बिटल है. तो केमिस्ट्री में ऐसा वर्ड्स यूज़ करते हैं, वैलेंसी, पेनल्टीमेट, प्री पेनल्टीमेट. तो केमिस्ट्री में वैलेंसी बोलो तो लास्ट है, वैलेंसी ऑर्बिटल मीन्स लास्ट ऑर्बिटल. पेनल्टीमेट ऑर्बिटल मीन्स सेकंड लास्ट ऑर्बिटल. तो लास्ट ऑर्बिटल बोलो तो वैलेंसी ऑर्बिटल है, सेकंड लास्ट ऑर्बिटल बोलो तो पेनल्टीमेट ऑर्बिटल है, थर्ड लास्ट ऑर्बिटल बोलो तो प्री पेनल्टीमेट ऑर्बिटल है. सो इन ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन, इट एंटर्स इनटू थर्ड लास्ट एफ ऑर्बिटल, प्री पेनल्टीमेट एफ ऑर्बिटल. तो यहाँ पर एफ ऑर्बिटल थर्ड लास्ट है. सो द लास्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इनटू थर्ड लास्ट ऑर्बिटल, pre-penultimate f orbital, so that the elements are called as f block elements. So generally the f block elements, lanthanoids, octanoids have similar properties, so the separation is very difficult. तो तुमको ऑलरेडी पता है ऑलरेडी आई थिंक. तो ये सभी लैंथेनॉइड्स में, एक्टिनॉइड्स में सीरियम, प्रोसीडियम, नियोडियम, प्रोमीथियम, समारियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, तो ये सभी लैंथेनॉइड्स, ऑक्टेनॉइड्स में या ब्लॉक एलिमेंट्स में प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर रहता. तो इसलिए ये सभी एलिमेंट्स को सेपरेशन करना इट इज़ वेरी क्वाइट डिफ़िकल्ट वन, ये डिफ़िकल्ट प्रोसेस है. सो जनरली स्पेशली इन द लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स में कंपेयर करें तो एक्टिनॉइड्स का ये डिफ़िकल्टी और रहता है. सो बिकॉज दे हैव डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स. थोरियम, प्रोटैक्टीनियम, नियोडियम, तो ये सभी एलिमेंट्स में तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट्स अलग अलग रहता. तो ये सभी एलिमेंट्स को सेपरेशन करना इट इज़ वेरी क्वाइट डिफ़िकल्ट वन. सो जनरली द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, लैंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स, सो दे आर जनरली प्रोनाउंस्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो थर्ड बी लेकर 1B तक ट्रांजिशन एलिमेंट्स है. थर्ड बी अप टू 1B ट्रांजिशन एलिमेंट, सेकंड बी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता. बट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसा बोलते हैं. सो जनरली ऑल द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, लैंथेनॉइड्स, ऑक्टेनॉइड्स, दे आर मेटल्स ओनली. वो सभी मेटल्स है, सॉलिड्स है, एंड दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड वैलेंसी. तो ये सभी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट्स अलग अलग रहता, वैलेंसी अलग अलग रहता है. तो इसलिए ये सभी एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज अलग अलग रहता. सो दैट द सेपरेशन इज वेरी क्वाइट डिफिकल्ट, especially in the case of actinoids one. So generally ये F block elements में common oxidation state +3 रहता, but a few elements they are showing +2, +4 oxidation states. तो लैंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स में common oxidation state +3 है. +3 बोलो तो 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे तो +1, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे तो +2. ये सभी एलिमेंट्स का common oxidation state +3 है. That means all these elements are donating commonly 3 electrons, +3 oxidation state. But a few elements they donate 2 electrons, +2 oxidation state. They donate 4 electrons, +4 oxidation state. So all the F block elements they are paramagnetic in nature. They forms colored compounds.
So they have the common electronic configuration is n minus 2 f1 to 14 n minus 1 d0 to 1 ns2. तो यहाँ पर देखें तो n लास्ट ऑर्बिटल है वैलेंसी ऑर्बिटल, n minus 1 सेकंड लास्ट ऑर्बिटल पेनल्टीमेट ऑर्बिटल, n minus 2 थर्ड लास्ट ऑर्बिटल प्री पेनल्टीमेट ऑर्बिटल. तो लास्ट इलेक्ट्रॉन प्री पेनल्टीमेट ऑर्बिटल में f ऑर्बिटल में एंटर होता, so that these elements are called as f block elements 1. So generally in the f block element, the elements with above atomic number 92, that is from 93. So above 92, that is they starts from 93 up to 1 or 2, so they are generally called as transuranic elements or transuranium element they are called. So the elements above the atomic number 92, so from 93, so they are generally called as transuranium elements or transuranic elements. So generally these transuranic elements they are highly radioactive and they are synthetic elements. तो ये सभी transuranic elements from 93 to 1 or 2 ये सभी synthetic elements है and they contain high radioactivity. Thank you.